Okay, the today topic which we are going to study is hedonic rating scale. In our last lecture, I have given you a brief information about it, and it is one of the mostly you can say used or conducted test by our students in the Department of Food Science and Technology, as well as it is used commonly by the human nutrition student whenever they prepare any sort of product. मैंने आपको इसके बारे में पहले भी क्लियर किया, लेकिन आज इसको दोबारा मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर लेता हूं ताकि हेडोनिक रेटिंग स्केल के बारे में आपकी जो कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाए. इट इज कॉमनली नोन एज 9 पॉइंट hedonic scale. ठीक है जी. From 1 to 4 samples are served to the panelists at one session in this hedonic rating test commonly, and it is very important that you should serve the sample in a minimum number so that your the analyzer or your panelist can easily give it the scoring marks or scoring number. The scale with different for this purpose scale with different ranges and other experience phrases could also be used. Commonly इसमें जो सेटअप किया जाता है हेडोनिक रेटिंग स्केल का, तो उसके लिए बहुत सी जो है वो फेसेस भी डेवलप किए जाते हैं. मींस आपके पास जो है फेसेस के मार्क्स डेवलप कर लिए जाते हैं, या फिर इसके बारे में कुछ फ्रेजेस भी बना लेते हैं. बहुत से फ्रेजेस जो है वो आप इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं. अगर आप नेट को सर्च करें तो वहां पे मुख्तलिफ किस्म की हेडोनिक रेटिंग स्किल्स को डेवलप किया गया है फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस एज वेल एज फॉर क्रिएटिंग वो कहते हैं ये फॉर मतलब जो आपका पैनलिस्ट है उसका शौक पैदा करने के लिए भी हेडोनिक रेटिंग स्केल को खूबसूरत से खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव से इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है. So scales with different ranges and other phrases could be also be used for this purpose. The results are analyzed for preference with data from large untrained panels. Um, as we have already discussed in detail about it, कि आपके पास जो पैनलिस्ट का जो नंबर है it should be more than more than 50 or up to 100. It should be up to 100. नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए आप कम से कम अपने एक मतलब आपका जो फर्स्ट डेट से लेकर आपने जब तक इसका एनालिसिस करना है आपके पास 100 बंदों का होना जरूरी है. तब जाके आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसमें आप इजीली एरर को मिनिमाइज कर सकेंगे. ओके जी. सो मतलब व्हेन प्रोनाउंस जब आप इसको कर देते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स आर मेट विद प्रीक्लूडिंग टेस्टिंग ऑफ अ सेकंड सैंपल और व्हेन इंडिपेंडेंट जजमेंट आर सॉर्ट आउट for separate cards are used for each product. Means whenever this is the card, this is an specimen evaluation card commonly used easily. You can say one of the mostly used specimen evaluation card, which is developed like this, in which you can use phrases like extremely till dislike extremely, or in the mid of it you can like extremely ranges from like very much, like moderately, like slightly, neither like nor dislike, dislike slightly, dislike moderately, dislike very much, dislike extremely. These are the points which are commonly used. Then you have to code your sample. As I have already informed you that minimum number of samples should be used for conducting this sort of hedonic scale experiment. It is better that your samples should have a very clear difference, so that in this way you can get a very good score, and as well as it will be easy for the panelists to give the better score or to give a differential score to your product. So 9 point, as it is named as 9-point hedonic scale, so commonly there are 9 points, means from 1 to 9. From 1 to 9. For example, if someone is, if some of the product which is completely disliked, that the it is it will be given a number like dislike extremely, means from 1 or 2, from 1 or 2, or if it is like extremely, so the maximum numbers are 8 or up to 9. What
the problem which of most of our students face, that at the 0 day, for example, at the initial day, whenever they prepare their product and they go for the first analysis, most of the students or the panelists give the highest marks, means they like all the samples like extremely, means most of the panelists or the student, whenever they present their data, they are given a number from 8 up from 8 up to 9. So it is, you can say, what we think, that if you are giving 9 marks, which is the topmost priority, it shows that you haven't found any sort of difference between the fresh one and the treated one. तो इस वजह से कॉमनली हम लोग ये स्टूडेंट को कहते हैं कि जब आपका पैनलिस्ट आएगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप उसको थोड़ा बहुत पहले से एजुकेट करें, ताकि वो इजीली आपके सैंपल की असेसमेंट कर सके. सो after this, the hedonic scale, when it is clarified, it is very important that you can get the reasons from your panelist. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो पैनलिस्ट है वो आपको जो भी सैंपल है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, वो हर एक सैंपल के बारे में आपको रीजन दे कि मैंने अगर सैंपल 1 को लाइक किया है, तो उस मतलब उसको अगर मैं कहता हूं कि it falls in the category of like extremely, it falls in the category of like very much, for example, like very much. So why I am saying it that I like it very much? The reason is I have to give the reason that for which specific criteria I like this sample. So for that reason, you have to mention you should ask your panelists to mention the reason. For example, if you are presenting an orange juice and you have added 2 spoon of sugar in comparison with 1 spoon of stevia. So if the panelist is liking, and you are asking him that panelist to give me your marks for the sweetness level, or for the sweet flavor, so specific sweet flavor, so he or she has to give the reason that why they have given 9, for example 8 marks. What was the reason that sample is given 8 marks out of 9? Is it clear? So reason should be clearly mentioned. This test is known as composite scoring test. Okay, in this case, commonly, as it is mentioned from the name, composite means आप कुछ किसी चीज का वेटेज देखना चाह रहे हैं अपने सैंपल के अंदर, कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल स्वीटनेस का या साल्टीनेस का वेटेज कितना आ रहा है. ठीक है जी, उसके लिए आप एक स्कोर चार्ट डेवलप करते हैं, और उसके लिए आप जो है ना वो अपने स्कोरिंग उसका डेवलप करते हैं, और उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की वेटेज के मुताबिक जो है ना वो स्कोर देते हैं. फॉर दिस पर्पज for this composite scoring test, so the resulting scores are compounded for any one panelist to arrive at a composite score. This method is helpful in grading product and comparison of quality attributes by indicating which characteristic is at a fault in a poor product. So as I told you कि आप किसी एक चीज का वेटेज देखना चाहते हैं कि इसमें मेरे प्रोडक्ट के अंदर जो पुअर एट्रीब्यूट आ रहा है. पुअर एट्रीब्यूट मींस आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर सिट्रिक एसिड डाल दिया है, आपने कोई जूस डेवलप किया और उस पे आपने सिट्रिक एसिड डाला हुआ है, और वो आपको तुर्श जायका दे रहा है, खट्टा जायका उसमें आ रहा है.
तो सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। तो आप जब इन तमाम के तमाम सैंपल्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक एक डिफेक्ट को देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल sourness, so for that purpose you can use this composite scoring test, and it is very well defined by the it is you can say very well analyzed in SPSS program. आप SPSS प्रोग्राम को अपने पास इंस्टॉल करें, ये जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है, और उसके ऊपर जो है ना वो आप अभी से अपनी कोशिश करना स्टैटिस्टिक के अंदर शुरू कर दें, ताकि आपको इसी तरीके के टेस्ट जो है वो उनको सीखने में और करने में आसानी पैदा हो सके। ओके जी।